हेलो गाइस। इस वीडियो में हम विजुअल स्टूडियो 2022 का एक स्पेशल फीचर डिस्कस करेंगे विच इज कॉल्ड हॉट रीलोड। कितने बार हमें जरूरत होती है कि हमने कोई चेंजेस किए, देन अगेन विल हैव टू build the application, then restart the application, then we'll see on the website that whatever we have changed, we'll see there that okay, change got reflected on the website, and the whole process really takes a lot of time. That depends on your uh, solution and build time. तो चलिए शुरू करते हैं. My name is Manish Kumar and you're watching Software Circle. तो सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं, दैट इज विजुअल स्टूडियो 2022. तो एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं. सबसे पहले विल हैव अ वेब एप्लीकेशन, एक विंडोज एप्लीकेशन से सी शार्प okay, so there, click on there. Okay, we'll say hot reload. Next, this is not required. Just and just create. Okay, we have the just यहाँ चेक करते हैं फाइल और इस तरह क्लिक on there. अभी देखते हैं क्या है वेबसाइट में. ओके, तो हमारा ये ओके, तो है इधर वेबसाइट. एक हम काम करते हैं इधर और विजुअल स्टूडियो को हम यहाँ रेंट. ओके, सोल्यूशन. तो ये सिंपल जो टेस्ट टेम्पलेट आता है हमने वो ओपन किया और अभी हम यूज होम पेज इंडेक्स, ये रहा हमारा इंडेक्स पेज. ठीक है, तो जैसा मैंने बोला था, हम ये विजुअल स्टूडियो में हम कुछ भी चेंज करें. अगर हमें कुछ चेंज करना है और हमें चाहता है हम कि ये रिफ्लेक्ट करे हमारे वेब पेज पे, तो हमें वापस वो ट्रैक करके रीबिल्ड करके वापस ऑन करना पड़ेगा, देन ये हमारे यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा. बट विजुअल स्टूडियो 2022 के साथ हमारे पास एक स्पेशल फीचर है विच इज कॉल्ड हॉट रीलोड. देखते हैं ये फीचर. ओके, अभी हम देखते हैं. हाँ, वेलकम, जस्ट मेक अ चेंज. वेलकम मनीष, ये हम यहाँ देख किया हमने. See, it got reflected directly as soon as we saved it. It got reflected on the page. हमने ये छोटा किया है तो ये हॉट रीलोड यहाँ आ गया है. एनीवे, ये ओपन करके बड़ा मैं दिखाता हूँ. सी, हॉट रीलोड. अभी बाय डिफॉल्ट जस्ट क्लिक इट. ओके, हाय मनीष, ये जस्ट से हॉट रीलोड. इट गॉट रीलोडेड. हॉट मनीष के. अभी हम यहाँ देखते हैं. दिस सिंबल एक्चुअली सिंबलाइज दिस इज हॉट रीलोड. ये यहाँ पे कौन सा वो तो बताता भी हॉट रीलोड. अभी हमने हॉट रीलोड ऑन फाइल सेव, ये मैंने चेक करके रखा है सो दैट जब जैसे ही मैं फाइल सेव करूँ ये ऑटोमेटिकली हॉट रीलोड ट्रिगर हो और ये हमारे वेबसाइट पे दिखे. ठीक है, तो ये हम अभी यहाँ वेबसाइट को इन करते हैं. ओके, थोड़े और चेंजेस हम ट्राई करते हैं अभी. तो इट्स नॉट ओनली टेक्स्ट, यानी HTML चेंजेस ऑल्सो ये इम्पैक्ट करता है. तो लेट्स राइट समथिंग देयर. ओके, to paste of
countries in wish list. Save. Oh, okay. Li, li, li. ये सिर्फ टेक्स्ट नहीं, हम थोड़े अभी स्टाइल शीट भी ट्राई करते हैं. जस्ट इट अंडर पी पैराग्राफ. हम not coming. Found something is happening. Okay, and here. Okay. Okay. Why is this happening? Let's try again. See what style. Okay. Background color. Let's make it red. Let's save. Oh, just copy this. Make it to green, green. इसे हम ट्राई करते हैं फॉन्ट देने की. Let's remove P here. We'll just try with okay style P. So B symbolizes to make it bold. Okay, save. It's bold. So see whether हम CSS change करें, style sheet change करें, या फिर कुछ text change करें, anything, whatever we change here, it will reflect here. And ये सिर्फ ये HTML फाइल तक ही लिमिटेड नहीं है. ये हम सी शार्प में भी कुछ भी चेंज करें वो भी हम हॉट रिलोड कर सकते हैं यहाँ पे. तो जस्ट ट्राई इन सी शार्प कंट्रोलर कंट्रोलर्स. दिस इज द इंडेक्स पे इंडेक्स रिटर्निंग. ओके, हम यहाँ ट्राई करते हैं. ओके, तो अभी ये हॉट रिलोड हमें यहाँ दिख रहा है. हॉट अंडर होम पेज हॉट अंडरस्कोर रिलोड. तो होम पेज इज देयर. तो भी हम भी इसको यहाँ से व्यू डेटा में टाइटल सेव होम कंट्रोलर में जाते हैं. ये हम बोलते हैं इसे
This is the item. यहाँ ये लोड क्यों नहीं हुआ, हम अभी देखते हैं थे कि हम शेयर लेआउट पे व्यू डेटा में टाइटल टू दिस, ये भी चेक करते हैं। Restart. This is tab title. हम अभी फिर से चेंज करते हैं कुछ C sharp. So let's save C sharp. C. It is, even if we change it from C sharp also, it gets reflected here. So हम C sharp में कुछ भी चेंज करें या फिर ये सिस्टम में कुछ भी चेंज करें, हॉट प्रीलोड फीचर वर्क्स वेल, it reflects everything, but sometimes we do require to refresh it completely. तो आइकॉन में यहाँ restart application, we'll just press the restart application and it will reload it. तो वहाँ हम देख सकते हैं, आप चाहे तो इसे क्लिक करके रखें ना करें, दैट इज अप टू यू। और इफ हम इसे क्लिक करके नहीं रखते तो हम डायरेक्ट ऑटो रिलोड आइकॉन पे क्लिक करके ऑटो रिलोड कर सकते हैं। डेवलपमेंट वाइज इट इज रियली इम्पोर्टेंट फीचर। थोड़े से चेंज भी हम करते हैं तो वी नीड टू रीलोड एवरीथिंग, इवन इफ a single line or maybe a text change is required. So it really helps. I hope it helps us a lot. So that is it from hot reload. Thank you.